Hey there, this is Simran from Simran Analysis Academy. Welcome to my YouTube channel. So आज ਆਪਾਂ इस वीडियो ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ रीडिंग मॉड्यूल ਦੀ and most of the students face problem while solving multiple choice questions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ difficult ਮੰਨਦੇ ਨੇ. So ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ verbs ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ MCQs ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ the best method and the easiest method ਨਾਲ solve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So let's begin. So in this video we will talk about how to solve MCQs using the keywords method. So basically अगर आप keywords की गल करिए तो एक हुंदा अपना मेन कीवर्ड इन द पैराग्राफ जो कि हुंदी है हमेशा एक टेक्निकल टर्म का मतलब की है कि आप इहो जिहा वर्ड लभना है जिसका या तो कोई किसी का नेम होवे बिकॉज नेम्स के कभी साइनोनियम्स नहीं होंगे या कोई इहो जी टर्म होवे जिसके साइनोनियम्स ईजीली लभ जाण या तुहानूं उन्हां दे साइनोनियम्स कभी होण ही ना तो उन्होंने आप कहने टेक्निकल टर्म्स राइट. तो एक हुंदा अपना मेन कीवर्ड दैन नैक्सट हुंदा अपने कोल माइक्रो कीवर्ड आप यूज़ करते हैं जो अपने को 3 to 4 ऑप्शन दित्तियां होण एंड सारे ऑप्शन से एक कॉमन कीवर्ड होवे दैन उस कीवर्ड नूं चक के आप उहदे नाल दा सपोर्टिंग कीवर्ड लैने आ जिन्हों आप कहने आ माइक्रो कीवर्ड राइट. As well as while solving MCQs you have to be very attentive towards the verbs क्योंकि verbs एक इहो जिहा words होणगीਆਂ जो तुहाडे आंसर नूं मार्क करन च तुहानूं हेल्प करनगीਆਂ right. So if I talk about the first question in this passage, the first question says neuroeconomics is a field of study which seeks to right seeks to as we know to तो बाद हमेशा verb दी फर्स्ट फॉर्म आती है राइट. दैट मीनस अगर आप इस सेंटेंस नूं जॉइन करना है तो जिहड़ी भी सेंटेंस दी स्टार्टिंग verb दी फर्स्ट फॉर्म तो होएगी वही सेंटेंस इहदे नाल जॉइन होएगा राइट. इन दिस केस एज वी कैन सी आवर फर्स्ट verb is cause, that's a verb's first form. Second verb is understand, third verb is understand and fourth verb is trace. तो आप माइंड च रखना है कि अपने को 3 verbs हैं cause, trace and understand right. Now our keyword is neuroeconomics. So basically ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ information ਨੂੰ सर्च करांगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ neuroeconomics keyword ਨੂੰ पैसेज 'ਚ स्कैन करांगे right. neuroeconomics स्कैन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੇ स्कैन करांगे cause ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, understand ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ trace ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ understand. ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੀਵਰਡਸ ਕੀ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀਵਰਡਸ ਕੀ ਨੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ right. So it says understand how good decisions are made in the brain, understand how the brain is linked to the achievement in competitive fields. So it is about competitive fields, it is about good decision. So good decision and competitive field आ गया अपने कोल micro keywords right. हुण आपां देखना है न्यूरो इकोनॉमिक सर्च करना है एंड आपां सर्च करना है कि कॉज कर रहे हैं कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं या ट्रेस कर रहे हैं राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज. ऑलराइट, so scanning, we always do scanning diagonally. So as it says neuroeconomics आप सर्च करना है. So here we found the word neuroeconomics. So जिथे तुहानू कीवर्ड मिले हैं राइट आपां ये सेंटेंस जिथों स्टार्ट हुंदा है उस फुल स्टॉप तो रीड करना शुरू करांगे. So this says remember अपने कीवर्ड सी cause, trace and understand. These discoveries have led to the field known as neuroeconomics which studies the brain's secrets to success in an economic environment that demands innovation and being able to do things differently from competitors right. हुण देखो studies means पढ़ाई करनी एंड पढ़ाई करन नूं आपां इंडिकेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग दे नाल राइट. तो आपां नूं ये तो श्योर है कि किते भी आपां नूं इत्थे कॉज नहीं मिलिया किते भी आपां नूं इत्थे ट्रेस नहीं मिलिया. स्टडीज़ नूं आपां लिंक कर सकते हैं अंडरस्टैंड नाल मीनस इन्हां दोनों दे विचों ही एक ऑप्शन आऊगी राइट. हुण आपां देखना है कि गुड डिसीजन की गल हो रही है या कॉम्पीटेटिव फील्ड्स की. सो जिथे आपां स्टडीज़ पढ़िया इत्थे आपां नूं किते भी गुड डिसीजन नहीं मिलिया बट आपां नूं इत्थे कॉम्पीटीटर जरूर मिल गया राइट. तो मीनस हुण इत्थे गुड डिसीजन वाला कीवर्ड नहीं आऊगा इत्थे आऊगा कॉम्पीटीटर्स वाला कीवर्ड राइट. देन आवर आंसर वुड बी सी क्योंकि इस अंडरस्टैंड मीन स्टडी दिता होया एंड इत्थे आपां नूं दिता है कॉम्पीटेटिव फील्ड. हुण अगर आपां बाकियां नूं लिंक करिए सो ब्रेन एंड अचीवमेंट here also they are talking about brain's secrets to success हो गया achievement and brain हो गया brain दे नाल मैच right. तो मीन्स अपना आंसर की आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हुण इत्थे अपने कोल कीवर्ड की दिता होया है iconoclast right. iconoclast so they are saying according to the writer iconoclast are distinctive means iconoclast वखरे ने क्यों ने बिकॉज इत्थे अपने को हुण की है रीजन दसना मीन जो डिस्टिंक्टिव क्यों ने आपां इहदा रीजन दसना राइट. सो दे आर सेइंग दे क्रिएट unusual brain circuits, their brain functions work differently, their personalities are distinctive, they make decisions easily. So इत्थे अपने कोल keywords आ गए create unusual brain circuits,
brains function differently, personalities are distinctive, or make decisions. So keywords are decisions, personalities, brain function differently and create, right? So इत्थे अपने को differently, create, distinctive and easily दी आपाते आंदा वांगे because these are our verbs, right? We will search for the information ICNO class, right? So इत्थे हुण अपने को as we know कि जिथे आपां नूं 28 दा आंसर मिले उस तो 27 दा आंसर मिले उस तो अगे ही आपां नूं 28 दा आंसर मिलेगा, right? So here we found the answer for 27. So इस तो अगे आपां सर्च कर दें कि iconoclast here. Briefly, an iconoclast is a person who does something that others can't be done. This definition implies that iconoclasts are different. Iconoclasts are different. ये अपना question सी which says that iconoclasts are distinctive, right? So iconoclasts are different from other people, but more precisely, it is their brains that are different in 3 distinctive ways: perception, fear response, and social intelligence, right? Each of these 3 functions utilizes a different structure in the brain. ਹੁਣ अपने को एक कीवर्ड सी different structure, but इत्थे गल कीती हुई है unusual brain circuits. Unusual is not different. इत्थे unusual है उथे different है, means option number A ता नहीं आएगी, right? then ਆਪਾਂ ਨੂੰ personalities ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, decisions ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, but ਆਪਾਂ ਨੂੰ brain function ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ because ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ iconoclasts are different but more precisely it is their brains that are different in distinctive ways. So our option would be that their brains function differently, right? So our option would be option number B क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ brain circuit मिले पर ਉੱਥੇ difference ਇੱਥੇ unusual है ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ नहीं, and personalities ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, decision making ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, right? So let's move on to the next question. According to the writer, the brain works efficiently. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कीवर्ड ਕੀ आ गया कि brain efficiently work क्यों करता है, right? So we will discuss about this. Brain work efficiently, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ efficiently word ਦੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ brain word ਲੱਭਣਾ ਹੈ. So here we got the answer for 28. ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ search ਕਰਾਂਗੇ. Okay, in the quickest way possible, right? Yes, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ brain ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ. Now we will read about this. The first thing to realize is that the brain suffers from limited resources. It has a fixed energy budget about the same as a 40-watt light bulb. So it has evolved to work as efficiently as possible. So here we got the word brain work efficiently. Question मिल गया. ਹੁਣ ਆਪਾਂ read करांगे options. So here we are given with it uses the eyes quickly. Uses quickly, interprets data logically, generates own energy, relies on previous events. So अपने कुल keyword आगे uses, interprets, generates and relies, right? Quickly, logically, own energy or previous events, right? ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं कि why it works efficiently. This is where most people are impeded from being an iconoclast. For example, when confronted with information streaming from the eyes, confronted with information streaming from the eyes, eyes इत्थे आ गया, it uses the eyes quickly. ਆਪਾਂ देखना use करदा है eyes ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ eyes ਕਿੱਦਾਂ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ quickly और slowly ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. So our option number 1 will be eliminated, right? Now for example, when confronted with information streaming from the eyes, the brain will interpret this information in the quickest way possible. Interpret is the word, but वो कह रहे ने interpret करता है information नु, but इत्थे की दिता है interpret कर रहा है data नु, means ये भी information अपने को नहीं आएगी. Now we are left with 2 options. It says energy and previous events, right? This information in the quickest way possible. Thus it will draw on both past experience and any other source of information such as what other people say to make sense of what it is saying. This happens all the time. So basically ये की कह रहे हैं एक किस ते draw करता है, it draws on the past experience. So here we have the word past experience दे की आगे previous events and draws ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ relies. तो option की आगे अपने को option number D, पर क्योंकि कितने भी ए नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि it generates its own energy. So अपनी option आ गई option number D, right? So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ keywords ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ formation ਪੜਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ long MCQs ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ time waste ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ confusion ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? Next, the writer says that perception is, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ keyword ਕੀ ਆ ਗਿਆ, perception is, perception ਕੀ ਹੈ, right? It is
a combination of photons, a reliable product, a result of brain processes, a process which we are usually conscious of. So a combination of photons and sound waves, reliable product what senses transmit, a result of brain processes, a process we are usually conscious of. Now we have to search for, so here we got the answer for 29. Now we will search for the word perception. We will scan diagonally. Yes, here we got the word perception is. So they are saying perception is not simply a product of what your eyes or ears transmit to your brain. So we had a keyword transmit, but एक ही कह रहे हैं, it transmit वाला product नहीं है, means transmit वाली option था आएगी नहीं here, क्योंकि ये कह रहे हैं a reliable product of what your senses transmit, but उत्थे की जा रहा है it is not a simply a product of what your eyes or ears transmit, means ये नहीं है, वो positive है, ये negative है. So option number second is eliminated, right? Now more than the physical reality of photons or sound waves, means एक ही कह रहे हैं physical reality of photons or sound waves तो ज़्यादा, perception is a product of the brain, means ए ना तो ज़्यादा ए है, means photons वाली option भी गई. So they are saying perception is a product of the brain. Product means जो brain तो अंधा है. So we have the option a result of brain processes. So we got the answer option number D. You can think about this कि जो भी अपने को options आंदियां ने, चार options दे विचों कोई भी दो options false होंगे, एक option true होएगी and एक option not given होएगी. As you can see here, ए वाली option अपन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, means this is not given, this is true, and ਇਹ ਦੋ options ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ false ਸੀਗੀਆਂ, right? Here also it was not given, these two were false and this was true. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ next video ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, right? Now move on to the last question. According to the writer, an iconoclastic thinker. ਹੁਣ an iconoclastic thinker ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, means ਜਿਹੜਾ person iconoclastic ਸੋਚਦਾ ਹੈ, centralizes perceptual thinking in one part of the brain, avoids cognitive traps, has a brain that is hardwired for learning, has more opportunities. So अपने कोल keyword आ गए, centralizes one part of the brain, avoids traps, and has a brain hand wired for learning and has more opportunities. So here we got the answer for 30th. Now we will search for the iconoclast. So here we have iconoclasts see things differently to other people. Their brains do not fall into efficiency pitfalls. Pitfalls hunde ne traps, right? So we got the word traps, we got the word efficiency. Okay, they do not fall means they avoid. So we can say that this can be option, but अपन next option भी think करेंगे. As much as the person's average brain, iconoclast either because they were born that way or through learning have found ways to work around the perceptual shortcuts that plague most people. So they are saying they work around the perceptual shortcuts, but they are saying this centralizes perceptual thinking in one part of the brain. They have talked about perceptual thinking, but one part of the brain the gal nahi. So option number E would be eliminated, right? So perception is not something that is hand wired. They are saying perception is not something that is hand wired, but एक कह रहे सीगे कि it has a brain that is hand wired. उधर not चा इधर positive चा, means A भी option नहीं आएगी and इसकी कितनी भी गल नहीं कितनी हुई, right? So they are saying it avoids cognitive traps and they are saying they do not fall into efficiency pitfalls, right? So basically we can talk about keywords. ਆਪਾਂ main keyword identify करना, अपना technical term ਦੇ ਨਾਲ location mark करनी है and micro keywords ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹੋਏ, verbs ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ answers ਨੂੰ ਬਹੁਤ easily mark ਕਰ ਸਕਦੇ in the case of MCQs. So this is the method of using keywords and verb forms to solve the MCQs. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ videos ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ please subscribe my channel and press the bell icon to get notified about the upcoming videos. Thank you. All the best.